Hello student, welcome to the next video of Business Studies class 11 and this is lesson 3 going on and that is public, private and global enterprises. And in the last video we have seen departmental undertaking. So now in this video we are going to study about statutory corporation. So before starting, let us understand what does this statutory corporation means. So student, if you want you can write down somewhere also that statutory means decided by law and corporation means company. Okay, so now and statutory corporation, let me give some example of statutory corporation also like SBI, LIC, Air India, then FCI, Food Corporation of India, RBI, Reserve Bank of India, ONGC, Oil and Natural Gas Commission. So these are certain example of your statutory corporation. So now let's see what statutory corporation is. Statutory corporations are public enterprises brought into existence by a special act of the parliament. So actually ये जो corporation होता है ये it is a kind of public means in this lesson we are going to study about public enterprises only because as I have told you that private enterprises we have already covered sole proprietorship partnership ये सब हम लोग कर चुके हैं. So इसमें हमें सिर्फ पब्लिक में हमने ऑलरेडी एक कर लिया है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कर रहे हैं. तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड ये आता है एग्जिस्टेंस में आया है बाय एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू. ओके, सो लाइक if we talk about life insurance corporation, okay, so why was it established? क्यों बनाया गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? So that to build the habit in people to save small saving for नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़. अब नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में कैसे अगर हमने सेविंग किया है इंश्योरेंस में सो वो नेशन बिल्डिंग में कैसे काम आएगा? क्योंकि देखो जब हमने पैसा सेव किया है इंश्योरेंस कंपनी में, हमने पैसा लगा दिया है, हमने अपना कुछ अमाउंट सेव किया है, तो हम जब इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हमें आज हमने इंश्योरेंस लिया, कल ही हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना. सो अब ये क्या होगा, ये जो सारे हम सबके पैसे हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, सेव हैं. अब वो पैसों को गवर्नमेंट क्या करती है, वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है और वहां से वो और प्रॉफिट गेन करती है. ठीक है. सो देयरफॉर एक तो ये स्पेशल एक्ट बनाया जाता है और पब्लिक एंटरप्राइजेज है जो एग्जिस्टेंस में लाते हैं बाय मेकिंग सम स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक. सो लाइक LIC, it was established to build habit in people to save small saving for nation building activity. Then it is not under the control of any ministry. Like department undertaking में क्या होता था, मिनिस्ट्री के अंडर में होता था, बट यहाँ पे there is no control of any kind of ministry. And since it is set up under like Life Insurance Corporation Act and is owned by the government itself, make it a statutory corporation. Clear? So the act डिफाइंस इट्स क्योंकि एक्ट के थ्रू बनता है तो एक्ट ही सारा पावर, फंक्शंस, रूल्स रेगुलेशन, एम्प्लॉयज के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सब कुछ कहाँ से आता है, आपका जो एक्ट बनता है वहाँ डिफाइन किया जाता है. एवरीथिंग इज बीन डिफाइंड ओवर देयर. देन they have the power of government and considerable amount of operating flexibility of private enterprises. Now देखो ये एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो है ही, बट थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस के जैसे जैसे प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइज होते हैं वो थोड़ा फ्री वर्क करते हैं, उन पर किसी का प्रेशर नहीं होता. तो है तो ये गवर्नमेंट लेकिन फिर भी ये प्राइवेटली एंटरप्राइजेस के जैसे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो ऑपरेशन में आराम से इजीली वो वर्क कर सकते हैं क्योंकि वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है. क्लियर? नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. सो the features are, as already we have discussed, they are set up under an act of parliament and are governed by the provisions of the act. जो भी act में provision बनाए जाते हैं उसके उसी के through वो govern होता है. Then it is a body corporate and can sue and be sued, enter into contact and acquire property in its own name. So as when I was starting this video I told you the meaning of statutory and corporation. So corporation means what? Corporation means company. और जब company form of business हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक चीज़ बताई थी आप लोग को कि company form में क्या होता है कि जब आप company बनाते हैं तो means company has separate legal entity, company is different from its members.
यही पढ़ा था ना, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी की अलग पहचान होती है, उस वो अलग सिग्नेचर करती है, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो कंपनी के नाम से करते हैं, वो किसी को भी सू कर सकती है या कोई और भी कंपनी को सू कर सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर सकते हैं कंपनी के नेम से। सो बॉडी कॉर्पोरेट है और दे कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम बिकॉज इट इज अ कॉर्पोरेशन, सो ये काम कर सकते हैं। देन अब क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है प्लस पब्लिक का भी, पब्लिक के थ्रू भी यहाँ पे फंड्स, दे कैन रेज फंड फ्रॉम, सॉरी इट ऑब्टेन्स फंड्स फ्रॉम बोरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम पब्लिक। तो जब भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो इधर दे कैन बोरो फ्रॉम द गवर्नमेंट या फिर पब्लिक से शेयर के थ्रू पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकते हैं। देन द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। जो भी कंडीशन होते हैं एम्प्लॉयज को गवर्न करने के, वो सारे कंडीशन जो होते हैं वो इस एक्ट में ही सब कुछ मेंशन होता है। क्लियर? सो दिस इज द फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी corporation. Now let's see the merits of statutory corporation. So the merits are as follows. They are flexibility, no government interference, autonomous organization and valuable instrument. So let's see the first point of merit, that is flexibility. They enjoy independence in their functioning and a high degree of operational flexibility. So student, as I've already told you that because this statutory corporation, they are not governed, means only special act has been passed and according to that they have to work. So they have their own sets of rules, regulation that are framed within the power of the act, and because of this it makes, means it is free from the government regulations and control, and as a result they manage their own affairs independently and flexibly. Clear? Means government का कोई भी हाथ नहीं होता, and just like private companies they have flexibility. Then no government interference. The government generally does not interfere in the financial matters including their income and receipt. So as I have already told you that there is no interference of political or government. Why? Because funds जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आते। लाइक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में क्या होता था, वहाँ पे फंड एलोकेट किए जाते थे, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लोग अरेंज करते हैं और या फिर पब्लिक से लेते हैं या फिर बोरो करते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट इनको अलग से असाइन नहीं करती है। ठीक, तो जब गवर्नमेंट देती नहीं है तो दे आर नॉट, मीन गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन एनी ऑफ दीज, एनी ऑफ देयर मैटर्स इंक्लूडिंग देयर इनकम या रिसिप्ट, कहाँ इनकम, आप कहाँ से इनकम हो रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हो, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता। Then autonomous organization, they frame their own policies and procedures within the powers assigned to them by the act. So means autonomous means what? Autonomous means freedom. Okay, so means freedom to take their own decision and to make their own policies, procedure or any policies, procedures, any policies or procedures के according they have to work. Then valuable instrument, it is a valuable instrument for economic development. Why economic development? स्टूडेंट अगर याद होगा हमने इसका एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का एग्जांपल में LIC बोला था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि आप छोटी छोटी सेविंग करो, और ये छोटी सेविंग कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे काम आएगा, क्योंकि आप जितने लोगों ने सेविंग की होगी वो सबको एक बार में तो रिक्वायरमेंट होगी नहीं पैसों की, ठीक है, तो वो पैसा तब तक के लिए यहाँ पे कंपनी के पास होगा, और वो क्या करेंगे, वो कंपनी कहीं और पे उसको इन्वेस्ट करेगी, वहां से और अर्न करेगी, और ये सारा पैसा आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आएगा। सो देयरफॉर इट इज सेड दैट इट इज अ वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? सो दीज आर द 4 मेरिट्स, एंड नाउ लेट्स सी द limitations. So the limitation, the points of limitations are rules, regulations, government and political interference, anti-social practices, and reduces freedom. So let's talk about the first limitations, that is rules and regulation. It does not enjoy as much operational flexibility as stated above. All actions are subject to many rules and regulations. So student, remember in merits we talked about flexibility, that see here, flexibility, that they enjoy independence in their functioning and a high degree of operational flexibility is there. But means
here degree of flexibility is low. And why it is low? Because मीन्स देखो ये पूरा 100% प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है, लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी के जैसे पूरा 100% प्राइवेट कंपनी नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा रोल होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि सम रोल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर, सो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को किसी हद तक लिमिट कर देता है. ओके, विच मेक्स मीन्स द ऑपरेशंस आर not that much flexible over here. Clear? Then the second limitation says government and political interference. Means government and political interference has always been there in major decisions or where huge funds are involved. Again, remember I had told you that means यहाँ पे मनी एलोकेट नहीं होती, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता था, वहाँ पे बजट एलोकेट होता था. यहाँ ऐसे बजट तो एलोकेट नहीं होता है गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन क्या होता है कि बोरोइंग कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हैं. और जब देखो, जब आप कहीं भी आप किसी से पैसे बोरो करते हो तो उसका थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होने लग जाता है. सो बिकॉज ऑफ ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर सर्टेन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सिर्फ कहने की बात होती है कि नहीं नहीं वहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है. Then comes your anti-social practices where there is dealing with public. Rampant corruption exists. Means corruption is present here. Why? See, as these corporations, they exist in making some personal profit. So corruption exists as they may कई बार क्या होता है, लोग हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं कंज्यूमर से, सो ताकि वो अपनी इनएफिशिएंसी को कवर कर सकें. सो देयरफॉर देयर इज करप्शन ओवर देयर. Then it reduces the freedom. Appointing advisors to the corporation board curbs the freedom of the corporation in entering into contracts and other decisions. So now what happens कि you know student, generally an advisor is appointed from the government. यहाँ पे काम को पूरा देख रेख के लिए एक एडवाइजर अपॉइंट किया जाता है. और बिकॉज ऑफ दिस एंटरप्राइज की जो फ्रीडम होती है, क्योंकि आपने एक अपॉइंट कर दिया, एक एडवाइजर अपॉइंट कर दिया, सो अब जो इस एंटरप्राइज है उसका जो फ्रीडम होता है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा कम हो जाता है. लाइक सपोज एंटरप्राइज नीड्स टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और टू टेक एनी डिसीजन ऑन देयर ओन. तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पाता है. और तो और कई मैटर्स में तो जो गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन के बाद ही आप काम आगे बढ़ा सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग भी हो जाता है. क्लियर? सो दीज आर सर्टेन limitations of statutory corporation. So this is all about statutory corporation, its merits, limitations and features. So thank you student, and please do like, share and subscribe the video, and in case you are having any problem you can ask me through comment box.